What do you think about cheat meals? For me, cheat meal is a scam. बहुत ज़्यादा यंग लोगों के अंदर you see lot of heart attacks. फैट अगर लूज करना है तो उसके लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. When it comes to intermittent fasting, I will not call it a trend because this is something which our ancestors have been following. Yeah, because in Ayurveda also they say कि सूरज ढलने से पहले before Exactly, you sunset should, yes, you should yes, have yes. your So meal. there are In female it happens like कि weight ज़्यादा जल्दी बढ़ता है. बढ़ता है. So like why is it so? जहाँ मतलब you see lot of people are in depression and full of anxiety. So do you think there is a direct connection between your nutrition and See, your moods? definitely हमारी बॉडी नेचुरली ओमेगा 3 नहीं बनाती. You might be at the risk of heart disease. Oh, अच्छा. कुछ लोग होते हैं जितना भी खा लेते हैं they don't gain fat. So there is this lady, um, uh, she lost 49 kgs in 10 months. Hello guys, welcome to Unseen X. My name is Uday. So Ayurveda में एक कहावत है कि food is the poison, food is the cure. So today's episode is going to be related to nutrition, and we have with us Dr. Nidhi Chaudhary, who's a clinical nutritionist, and she has got her brand. She's got her diet boutique in Gurgaon, which is called Curves and Contour. Welcome, Dr. Nidhi. Thank you so much, Uday, for having me here. How have you been? All good, All all good. good. Thank you so much. So we're going to start the episode now. So coming on to the first question, I would want to ask you. So can you tell me any myth related to nutrition which you came across recently? So उदय कितने बताऊं, इतने सारे myths हैं. Instagram, social media these days is flooded. So two of my favorite biggest myths related to nutrition today. One is all calories are equal, which I seriously don't believe. How can calories be equal when it comes to nutrition and the quality of food? So Right. there is one very famous influencer, fitness influencer on Instagram who claims that he can make you lose weight by making you eat Maggie every day. So I wonder how can that happen? So if you compare calories between apple and one biscuit, apple has 54 calories and one biscuit has approximately 60 calories. If you eat one apple, you'll feel full, you'll feel satiated, and you will not have the urge of having another apple. Right. Okay. Moreover, an apple is considered as negative calorie food. Why? Because when you eat an apple, it helps you in burning more than 200 calories when you consume it. At the other hand, if you talk about biscuit, you will have the urge of having another biscuit, maybe another biscuit, and you'll pile on calories over calories. So that is why, as per my understanding, all calories are not equal. Right. The other one, again, that you lose weight by being in calorie deficit. Again, I wonder how, because when people contacts nutritionists or dietitians, वो already उस dieting phase से निकल के and depressed होके ही किसी nutritionist को या fitness trainer को contact करते हैं. Right. Wherein they are already eating too less. And I am also seeing a lot of misinformation on social media claiming that you should eat, मतलब Google के language के हिसाब से eating in calorie deficit is okay, but practically when somebody is trying to reduce weight, they drastically reduce calories. Right. So it is more important to make them understand that eating right and eating more, because अभी off late what has happened, I'll tell you. One example, a lady weighing 104, she connected me for offline consultation. So she precisely mentioned that she want to have calorie deficit diet. So Achha. I asked her, okay, what do you understand by calorie deficit? तो she simply said कि कम खाना होता है. मैंने कहा कि कितना कम खाना होता है? Just to be precise, can you explain your daily का routine from the time you wake up to the time you sleep, what all you eat? So she mentioned that she is on one meal a day, and that's her lunch only. And मैंने पूछा कि कितनी calories खाते हो? तो she mentioned कि I'm eating approximately 600 calories in one meal. No tea, no coffee, nothing. She's a principal in a renowned school, and
She also does 1 hour of yoga in evening. So as per my understanding and as per science, she needs to at least eat more than 2500 calories to start seeing fat loss in her journey. Right. But just because she has overheard from social media, from what not source, she had been eating too less. So ऐसे cases में people, they need to eat more to see weight loss. So there are a lot of new trends coming up. So like, what do you think about keto and See, intermittent keto is fasting? history now, Yeah. because this is not everyone's cup of tea. It is not sustainable. It is not practical for some people. It is very expensive also. So I'll not talk Right. about Keto? keto. Yes, Yeah. but yes, intermittent fasting. But again, when it comes to intermittent fasting, I will not call it a trend, because this is something which our ancestors have been following. Right. Right? I belong to farmers family. I've seen my Dadaji, my Tauji, all of them having their last meal between 6:37, going off to bed very early, and then getting up at 4, खेत में जाना है, काम करना है, 11 बजे उनका खाना जाएगा. So intermittent fasting is something which people have been following. Right. It is just that कि over the period of years, when लोगों ने 9 to 5 करना शुरू किया, ट्रैफिक स्टक हो गए, ट्रैफिक में स्टक हो गए, 7 बजे 8 बजे घर आ रहे हैं, तो उनका डिनर टाइम ओवर Late हो गया. यस लेट Right. हो गया, तो वो एक लाइफस्टाइल बन गया. Yeah, because in Ayurveda also they say कि सूरज ढलने से पहले before Exactly, you sunset should, you yes, should yes, have yes. your So meal. there are our hormones works that ways. राइट. तो उसका मतलब काफ़ी बेनिफिट होता है. Yeah, definitely fasting helps. देखो, our digestive system from mouth to your colon to your rectum is Right. like a nali. Right. राइट, आप उसमें भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे, तो इट विल नॉट Blockage. कम आउट. राइट, तो अकॉर्डिंगली यू शुड गिव सम स्पेस, सम टाइम, के जो Yeah. आपने प्रीवियस मील्स खाए हैं पूरे दिन में, वो अच्छे से डाइजेस्ट हों. एंड Right. इट टेक्स 12 to 14 आवर्स अच्छे से खाना डाइजेस्ट होने में. Right. So I really wanted to ask you this thing. This is one of my favorite questions. So what do you think about cheat meals? Like, you know, you're fasting and you're doing all diet and all proper, and then you have like, okay, now 2 days I have my cheat meal, Saturday, Sunday. या सो फॉर मी चीट मील इज अ स्कैम. Right. जो pro like me, I would say, I know how to balance, how to combat extra calories. Okay, and you don't burn extra calories by running on a treadmill or doing extra workout. You combat extra calories by balancing your meals. But for some people, they consider cheat meal as their reward, कि हमने Monday to Friday बहुत strict और restrict होके diet follow की है, so we deserve a cheat meal. Once you understand what food does to your body, once you eat a healthy nutritious diet, or once you eat a high sodium food diet, कि आपने रात को चाइनीज़ खा लिया, या आपने पार्टी कर लिया रात को, नेक्स्ट डे आप देख रहे हो कि यू आर पफ्ड, यू आर ब्लोटेड, यू एंड अप गेनिंग ऑलमोस्ट, फीमेल्स में तो यू एंड अप गेनिंग 1800 grams overnight just by having one cheat meal, wherein they don't even reduce 500 grams to 800 grams in 7 days. Right. So some of them, they consider it as a reward, but ऐसे लोग हैं who start understanding के cheat meal hardly matters. वेनेसडे को भी कर लूंगी तो आई नो कि डॉक्टर निधि ने बता दिया है कि बैलेंस कैसे करना है, दैट्स ऑल. राइट. तो ऐसा मतलब यू मेंशन्ड अभी कि इन फीमेल इट हैपेंस लाइक कि वेट ज़्यादा जल्दी बढ़ता है. सो लाइक व्हाई इज इट सो? So we females, unlike males, are loaded with hormones, and every week our hormonal cycle, it fluctuates. ठीक है, सो जब पीरियड्स आने वाले होंगे उस टाइम पे यू विल बी वेरी ब्लोटेड, यूट्रस बहुत हैवी होगा, यू विल एंड अप गेनिंग 1 to 1.5 kilos. तो ये हॉर्मोन्स बहुत दे प्ले अ लॉट विद देयर इमोशंस, आई वुड से. Right. Okay, so I would want to ask you this one thing. Nowadays, anxiety is very common in the society. So, जहाँ मतलब you see a lot of people are in depression and full of anxiety. So, do you think there is a direct connection between your nutrition and See, your definitely, moods? yes, definitely there is a direct connection, because there are micronutrients in our body. So like folate,
your vitamin B6, your vitamin B12, who are directly linked with your mood disorders. अगर magnesium, zinc, all of these micronutrients and minerals, आपकी बॉडी में जैसे ही इनकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, योर बॉडी विल स्टार्ट बिहेविंग वियर्डली. ओके, लाइक अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, एट द एंड ऑफ द डे यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग लेग क्रैम्प्स, विल नॉट फील गुड. जिंक की डेफिशिएंसी है, फोलेट की डेफिशिएंसी है, सो यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हेयर फॉल. Okay, and even males, they are seeing male baldness, so it takes a Right. toll over their mental health. कि aesthetically how are we going to look, so it leads to depression somehow. Right. So ऐसा भी होता है in these cases, like is it genetic also? Somehow yes, no, micronutrients तो are not नहीं, not genetic, but micronutrients, baldness, but yes. in general, मतलब I'm asking Yeah. कि baldness is Yeah, like it is genetic. majorly it is genetic. But if you take care of your health, if you take care of your balanced, your meals are balanced, you are eating optimum nutrition in terms of good protein diet, and taking care of all the micronutrients, regularly Right. taking care of your supplements. क्योंकि आज का जो हम लोगों का lifestyle है, considering stress, considering the eating habits, we tend to fall short on micronutrients. So you Right. should get your blood work done every third month at least. So, Dr. Nidhi, I would also want to ask you the role of omega-3. Like, I've heard that it helps you, like, it actually increases brain efficiency. It does. So, it's also one of the most important, you were talking about micronutrients. So, it's also one of the most important nutrient for our brain, Yes. I guess, like. Yes, it is very much important, and it is also known as a stress buster, micronutrient. And seeing today's lifestyle, and first thing first, I would want the world to know that हमारी बॉडी नेचुरली ओमेगा 3 नहीं बनाती है. तो बॉडी को ओमेगा 3 आपको नेचुरल फूड सोर्सेज से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दिस इज़ वाई दे से दैट योर meal should include flaxseed, right? Then your walnuts. If your diet is lacking any of these food, then you must keep taking supplements. These days people are really getting conscious, and if you've noticed, COVID days में doctors जब medicines या supplements suggest करते थे, so omega 3 used to be one of their supplements which they used to prescribe. So omega 3 is it is also called an essential fatty acid. Right. Yeah. And like there's a lot of myth as well, I guess, कि omega 3 मतलब सिर्फ fish oil. No, काफी no, लोग you मतलब get there are a lot of options in so vegetarian there are as well. vegan, yes, there are vegan sources. Yeah, there flax are seeds. flaxseed capsules, but dosage difference would be there, because if you're taking fish oil, your body can function well by taking 2 capsule if it is weighing 1400 above mg. But अगर आपका flaxseed या vegan source है, you need to consume it at least 3 capsules a day. अच्छा. Yes. So in vegan, like you need more quantity. Yeah. ज़्यादा. Because आपका जो dosage है वो उतना optimum नहीं है. Right. Yeah. Right. It is hardly 800 mg to 1200 mg maximum. अच्छा. Yeah. Oh, interesting. So, like I wanted to ask you this thing also, like usually what's the difference between good cholesterol and bad cholesterol? And this thing also I've heard कि cholesterol जो है 70% liver से आता है. Is it true? And Yes, 30% you get it from मतलब other sources, external sources. So what is पहले you need to understand what exactly is cholesterol. So Right. cholesterol is a fatty substance which is there in your bloodstream, and it is very much needed for your body. Okay, but जब ये cholesterol एक लिमिटेड जो रिकमेंडेड या जो आपका आपके ब्लड वर्क में जो एक नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है, इट बिकम्स बैड. right? Like there are 2 kinds of lipoproteins in your body. One is HDL, one is low density, जिसको आप LDL बोलते हो, HDL Right. and yeah. So Right. HDL is good cholesterol and your LDL is bad cholesterol. इसके अलावा भी जब आप ब्लड वर्क कराते हो तो उसमें आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी आता है उसमें, एंड VLDL भी आता है. Right. So these are few of the lipoproteins which are present in your bloodstreams. Okay. जब आपका
लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम से लिवर में जाते हैं, वहाँ जाके क्लीन होते हैं, क्लीन होके देन दे गेट एक्सक्रीटेड एंड दे आर एक्सपोर्टेड टू ऑल योर बॉडी ऑर्गन्स एंड पूरा बॉडी में. नाउ LDL आपकी बॉडी में बढ़ गया, सो जो रिकमेंडेड मतलब जो आपका नॉर्मल रेंज ऑफ LDL है, इट इज़ अप टू 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. अगर ये इंक्रीज कर गया, that means that it is directly linked with or it is alarming and you might be at the risk of heart disease. ओह अच्छा. Yeah. सो आजकल मतलब ये भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा यंग लोगों के अंदर यू सी लॉट ऑफ हार्ट अटैक्स. Yes. You know? So there are theories, behind these. जितने ही एक्सीडेंटल के कोई लड़का ट्रेडमिल पे रन कर रहा था, he died of heart attack. They say that these are the cases after taking COVID medicines. But our lifestyle have become so sedentary कि हम पूरा दिन हम सोते हैं, सो के जब उठते हैं हम अपने बेड से आके सोफे पे बैठते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं 10-15 मिनट एंड देन वी स्ट्रेट अवे हिट टू द कार. कार में बैठे 2-2 घंटा हम ट्रैफिक में स्टक हुए, ऑफिस गए, टेबल चेयर पे बैठ गए. सो लाइफस्टाइल हैज़ बिकम सो सीडेंट्री कि कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो अ रीज़न, क्योंकि यू आर नॉट. अब फूड इज़ फ्यूल. खाना तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया हमारा पिछले लास्ट 20 ईयर्स में. लाइफस्टाइल के हिसाब से फूड हैबिट्स हमारी चेंज नहीं हुई. फूड इज़ फ्यूल. जैसे आप कार में डीजल, पेट्रोल या आप उसको चार्ज करते हो, यू डू इट ओनली व्हेन यू हैव टू यूज़ इट. अननेसेसरीली खड़ी गाड़ी में अगर आप फ्यूल अप करोगे तो इट विल स्पिल आउट. सेम इज द केस विद द ह्यूमन बॉडी. फूड इज फ्यूल. आप खाओगे, सब कुछ खाना है, हमें पार्टी भी करनी है, हमें अपने टेस्ट बड्स पे कंट्रोल भी नहीं रखना है, बट उसको बर्न तो करो. Right. So that is one major reason behind it, sedentary lifestyle. True. I think आज की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा आलसी है compared बिल्कुल. to. You won't believe, Uday. Of late, I have been seeing cases of childhood obesity तो था ही, but these children aged 8 years, 9 years, with constant weight gain, with high blood sugar, मतलब pre-diabetic. अच्छा. Yes. 8-9 साल के बच्चे, they are seeing pre-diabetic. Right. So, like diabetes, you're talking about diabetes. Diabetes के भी like I've heard, आजकल हर दूसरे या तीसरे बंदे को Every second person is pre-diabetic. Yeah. Yes. And like there are diabetes also. There are two kinds of diabetes. Yes, there is type 1, Yeah. type 2. Type 1 is genetic, which is मतलब बचपन में ही diagnose हो जाता है that the person is has to take insulin. Right. There is type 2, which is only because of the food habits and the lifestyle. Right. और I say that I'm taking guarantee and a surety, if you follow a healthy lifestyle, active lifestyle, you can reverse your type 2 diabetes. You can get rid of the medicines or the pills, whatever आपका doctor suggest कर रहा है. Right. But for type 1 diabetes, as of now, there is no you cure, have right? to take insulin. Yeah, right. Because I saw some articles before about type 1 diabetes also. They're finding some cure, or they are actually searching like they got this stem cell Okay, stem cell repair therapy, yes, therapy, yes, right? हाँ. Yeah, so I have to read about it. yeah. So heart condition also, like mainly it's like arteries and all, it's blocked. जब तब mainly होती है heart condition, right? So is there a way to reverse that also, like Yes, if बिल्कुल. like without it any is surgical again, this thing or it depends के क्या stage है. अगर बहुत ज़्यादा clot है तो it has to be removed. Right. अगर otherwise if शुरू के levels में आप these days people get their blood work done very regularly. Every 6 months it is very much normal these days. लोग करा लेते हैं. जैसे ही आपको दिखता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो गया आ रहा है, especially your LDL levels are way high. VLDL अगर हाई है, it can be because कि you are a non-vegetarian. तो non-vegetarians में generally VLDL हाई आता है. But अगर LDL levels हाई आ रहे हैं, high time you must start taking care of your health. Natural ways में without taking medicines for cholesterol, one can take it down. कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको omega-3 capsules बढ़ाने हैं and take more protein diet,
हाई प्रोटीन डाइट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप अपनी डाइट में डालो. जहाँ आप नॉर्मली 2 से 3 रोटी खाते हो उसको 1/4 पार्ट माइनस करके उसकी जगह फाइबर इंक्रीज कर दो. सो वो Right. अप्रोच इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर सस्टेन करना है चेंजेस. अदरवाइज तो पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि चलो मेडिसिन तो है ही, मेडिसिन खा के ज़िंदगी गुजार लेते हैं. Right. माइंडसेट हैज़ टू बी चेंज. Exactly. And like, what are the signs you look for? Like, if a person wants to know that if their heart is like healthy heart or unhealthy heart, like what are the signs of unhealthy heart, I would ask. Obesity is सबसे पहले तो I would say obesity. If somebody is obese, somebody is overweight, थोड़ा सा ही चलते ही you know pant, Right. है ना, and you know that you are not eating properly. बाहर का जंक फूड आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो. Right. बाकी बेस्ट वे टू डायग्नोज दैट यू हैव हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज बाय चेकिंग योर Checking blood work. blood Yeah, work, getting yes. your blood works done. इसको लिपिड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, you Right, should right. get your lipid profile done Right. In every 6 months. every 6 months at least. Right. So Nidhi, there was this question, like मेरे काफ़ी friends ने, मैंने बताया उन्हें कि I am going to meet a nutritionist and अगला podcast के बारे में मैंने बताया, so they were like कि यार एक चीज़ ज़रूर पूछना about fat loss, कि what foods would you recommend if a person wants to lose fat like quickly? Okay, Yeah. so there is nothing called a quick fix. First Yeah. thing, मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन. फैट अगर लूज करना है तो उसके लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. देन कम्स योर स्लीप. ओके, अ गुड क्वालिटी स्लीप ऑफ 6 to 7 hours. दे से 8 hours, ये भी एक बहुत कंफ्यूजिंग स्लैब है, 6 to 8 hours. सो आई टेल माई क्लाइंट्स कि 8 hours ऑफ स्लीप जो आपके घर में मेड आ रही है ना, उसके लिए ज़रूरी है, बिकॉज वो 5 घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके आ रही है. Right. है ना. द लेवल ऑफ हार्ड वर्क, द लेवल ऑफ स्ट्रीनस एक्टिविटी शी इज़ डूइंग, उसको बेचारी को 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही है. बट जस्ट बिकॉज यू रेड इट ऑन गूगल, यू डोंट नीड 6 hours ऑफ स्लीप. 5 to 6 hours लोग योग निद्रा करके भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं. Right. राइट. सो 6 to 7 hours मोर देन इनफ. वो 1 घंटा डेडिकेट करो अपने लिए, वेयर इन यू आर एटलीस्ट हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यू नो, पेशेंटली, नॉट इन हश. ओके, कि भागना है, ऑफिस जाना है. तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर फैट लॉस. Right. ठीक है, वेट तो आप भूखे रह के भी कम कर लोगे. एक्चुअली मेरी सिस्टर है, वो हर बारी मतलब मेरे स्टार्ट फर्स्ट कहता करती है है ना, हाँ जर्नी. नहीं, बट वो ना जब भी जिम जा रही होती है, हाँ. सो उससे पहले हमेशा ब्लैक कॉफ़ी पी के जाती है. ओके, सो डू यू हैव एनी टेक ऑन दिस? सी लाइक इज इट गुड? नो, इट इज़ गुड. सी, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ ओके. अगर आपका कैफीन का इंटेक भी रिकमेंडेड जो डोजेज है आपका डाइटरी गाइडलाइंस के हिसाब से, अगर आप उसको एक्सीड कर देते हो, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हार्म. बट अगर उनको ज़रूरत है, डोंट हैव इट जस्ट बिकॉज के उसके फिटनेस ट्रेनर ने उसको बताया है या उसने कहीं गूगल पे पढ़ा है या कोई वायरल रील देखी थी. डोंट हैव इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. हैव इट इफ़ योर बॉडी नीड्स इट. राइट. क्या उनको एनर्जी डेफिशिएंट लगती है वाइल वर्किंग आउट? देन इट ऑल्सो डिपेंड्स. प्री वर्कआउट के हिसाब से वो लेती होंगी ना. नाउ प्री वर्कआउट इज़ आइदर रिक्वायर्ड अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो क्योंकि आप एम्प्टी स्टमक होते हो. And pre-workout, I don't suggest if a person is only working out for 40 minutes. अगर आपका वर्कआउट 40 मिनट से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल बिल्डिंग कर रहे हो, देन यू कैन टेक. राइट. ओके, बट आई डोंट रिकमेंड बिकॉज वो फैट लॉस में फिर हेल्प नहीं करता है. ट्रू. सो यू वर ऑल्सो टेलिंग अबाउट सम ऑफ द फूड्स. फूड, यस. या. So the very important thing is that all your meals, चाहे आप 2 meals a day ले रहे हो, 3 meals a day ले रहे हो, these meals should have one source of good protein, lean protein. If you're a vegetarian, have at least 2 eggs. आपके तीनों egg. Now when it is about if you want to know about muscle gain or just fat loss, if it is fat loss, then protein is important, then fiber is important. Okay, then आपका जो carb जिसको हम रोटी और राइस के थ्रू लेते हैं, it should not exceed for more than 2 meals. Fat loss अगर करना है, then you should have omega-3 fatty acids in the form of, you can have 1 tablespoon of mixed seed powder on any fruit. Right.
Yeah. So also this thing I want to ask कि कुछ लोग होते हैं जितना भी खा लेते हैं they don't gain fat. Yes, ठीक there is है, so they always are one friend in the group who can eat everything and she right. will never gain the weight. They are gifted, They are I gifted. guess. So like what does metabolism? How does metabolism play a role You know, in this? yeah, a very interesting question. So metabolism ही एक होल सोल चीज़ है विच टेक्स केयर ऑफ योर वेट लॉस, विच टेक्स केयर ऑफ योर वेट गेन. देन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट यू क्लीन योर स्टमक, दैट यू क्लीन योर गट. लोगों Right. को समझ ही नहीं आता है, वो लोग यू नो दे कीप ईटिंग ईटिंग ईटिंग, उनको समझ ही नहीं आता है दैट दे आर ब्लोटेड, है ना. दे आर पूरा दिन मतलब दे आर फाटिंग एंड दे फाइंड इट वेरी नॉर्मल. इट इज़ नॉट Right. नॉर्मल. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने मेटाबॉलिज्म को अगर आपको हाई रखना है, दैट यू कीप योर स्टमक क्लीन. Right. ठीक है. सेकेंड थिंग, योर मेटाबॉलिज्म primarily depends on the water intake that you drink throughout the day, good sleep. Then third is your non-exercise activity. जनरली लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट कर लोगे या आप वज़न उठा लोगे. दैट 1 घंटे का वर्कआउट विल नेवर सफिक्स और यू विल नेवर सी द प्रोग्रेस until and unless you work on नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़. अब ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ WHO ने बोल दिया कि 10,000 स्टेप्स कर लो, Right. 12,000 स्टेप्स कर लो. आई सी पीपल वॉकिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स के मुझे वॉच में देख के Steps पूरे आज करने हैं. 4 किलोमीटर की वॉक करनी ही करनी है. दिस इज़ नॉट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़. Right. नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ हो रही है कि आप अपने डॉग को वॉक पे लेके चले गए, ओके, या आप वॉक द टॉक कर लिया, आपका जैसे कॉल आया. अगर 9 to 5 वाले जो लोग वर्क फ्रॉम होम हैं, दे शुड इन्वेस्ट इन सम स्टैंडिंग डेस्क. कन्वर्टेबल डेस्क आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. So every time you stand up, your body tends to burn 3 to 5 calories. So imagine if you get up 20 to 30 times, so you will eventually lose fat. Right. By then never keep a water bottle alongside desk पे कभी मत रखो. अच्छा. Always go out, drink water and then come back. So ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ इंप्रूव करती हैं. अच्छा. घर हाँ, में of अगर course. कोई फीमेल है तो शी कैन गेट हरसेल्फ ऑक्यूपाइड इन मे बी गार्डनिंग, है ना. पानी That's जब very पीना है तो interesting. किचन में जाके पानी पियो. डोरबेल बज रही है तो खुद जाके खोलो दरवाज़ा. सो जितना देर आप बेड पे रहोगे तो 8 घंटे की नींद तो आप वैसे भी बहुत अच्छे से ले रहे हो. True. So मतलब मेटाबॉलिज्म ऐसे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता. No. या मतलब दैट्स नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली, सकते हैं. बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती Right. है. मतलब आप अगर ये देखो कि गूगल खोलो कि हाउ टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म और वो 10 चीज़ें निकाल के उससे नहीं बढ़ेगा. कुछ लोग कहते हैं ये जेनेटिक है कि मतलब इट कांट बी इम्प्रूव्ड. ऐसे बहुत लोग हैं जो Habits मतलब are genetic, Uday. Habits are genetic, I would say. Obesity या मेटाबॉलिज्म नहीं है. ठीक है. आई नो many people who have changed their parents' food habits. So Nidhi, I would also want to ask you that how does stress impact your fat loss या फिर your overall health, I would say. So Uday, there is one hormone which is called cortisol. It is also called stress hormone. जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे for any reason, you like anything, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई या बॉस से लड़ाई हो गई या anything, आपका cortisol लेवल बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म लो होगा. They are, what do you call it, indirect proportion. Right. So good that मतलब I personally believe कि स्ट्रेस देने की चीज़ होती है, लेने की चीज़ नहीं होती है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. बट स्ट्रेस से डील करना चाहिए और अगर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो ले लेनी चाहिए. बट क्योंकि आई नो पीपल they link stress with their eating habits. This is called emotional eating. Right. So when they feel stressed they eat more. Yeah, they want to eat more. They crave maybe for sugar, maybe for salt. Like there is this Shefali Chaya in this movie called Dil Dhadakne Do, wherein she had a fight with Anil Kapoor as her husband, and she was in the room, she was hogging on a piece of cake. So this shows the level of stress people have it, and it takes a big turmoil. Right. Yeah. So there are a few
herbal teas available, like your blue, what is that? Peacock blue tea. I'm forgetting Chamomile its tea, name. nahi? Yeah. Oh, ye- So there are many herbal teas which have proven that they are stress busters. They have some impact on stress levels and they help in releasing Yeah, stress. I've heard about this chamomile. I Yeah, usually chamomile drink it tea. sometimes. Yes, yes. So at night, usually they say It at helps in night, relieving yeah, stress. Then it's very good. again, personal experience. I am advanced level yoga, student. Right. 1 hour of workout, you do intense stretching, and it will release stress from your Right. body, because it shows that you love yourself, and when you know that you love yourself, it releases stress. Right. I think yoga is way more Not only better yoga, than, any kind of workout you yeah. love. Matlab, I am not favoring only yoga, any Right. workout. Right. I was the one who was against yoga, but 1 year of yoga, the entire first wave of COVID, and I dedicated myself. I started learning yoga from the basic, and I experienced कि जो मेरे दोनों C section के बाद जो back pain persistent थे, वो immediately ऐसे गायब हुए हैं. Right. सो एनी वर्कआउट, आपको स्ट्रेंथ पसंद है, आपको पिलाटेस पसंद है, आपको योगा पसंद है, जुम्बा पसंद है, एनी वर्कआउट, जस्ट स्पेयर 1 hour फॉर योरसेल्फ. राइट. सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट कि स्ट्रेस के बारे में, तो यूजुअली मैंने ये चीज़ भी देखी, आई सीन लाइक पीपल हु आर ओबीज, मतलब मेरी ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि दे आर मोस्ट ऑफ लाइक माई नोन, उनके साथ ऐसा है कि दे आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ स्ट्रेस या फिर बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं. मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ काफ़ी नोन में जो अभी पिल्स पे हैं, एंड पिल्स फॉर एंटी डिप्रेसेंट्स. या राइट. एंड मतलब वेट उनका बढ़ता जा रहा है, एंड लाइक डू यू हैव एनी टेक See, ऑन दैट? it again depends. If they are anxious about their weight, then I will blame their family members. ठीक है? कोई भी obese person, male or female, they fail in their weight loss journey क्योंकि उनको environmental support नहीं मिलता है. राइट. ठीक है? So मेरे पास अगर कोई client आता है and she or he wants to start their journey, so in the counseling session, I especially tell them, try incorporating these changes in the entire family. ठीक है? जिसको वेट कम करना है उसका वेट कम होगा ही होगा, जिसको नहीं करना है उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी. We all know, after passing through pandemic and COVID, the only thing the person was crying for was immunity, right? So immunity is this important. True. So if you talk about obese person and he is anxious or low in confidence or is in depression just because that he is not able to, or he or she is not able to reduce weight, I will only blame the environmental factors. The moment they start their journey, कोई बात नहीं, आज खा ले, कल से स्टार्ट कर लेना, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर लेना, 1 जनवरी से एक मील से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है. राइट. सो डू यू ऑल्सो गेट पेशेंट्स लाइक who ask you कि we don't want to go on antidepressants, and but tell us some diet like which can actually help us Yes, in improving yes, moods? but they need a lot of motivation, constant supervision. Right. मतलब I don't know, doctors say that there is no direct link between antidepressants and weight gain, but you feel drowsy and sleepy after taking antidepressants, which actually impacts your activity levels. Yeah, actually I was about to ask you that. So it is very important to take care of your diet when you know that you are not very active. So like I mentioned already that your food is fuel, तो आपको खाना ज़्यादा तब खाने की ज़रूरत है when you are active. अगर आपको पता है that you are less active, like on days for last past 4-5 days I'm not doing my yoga, okay, so I know I'm not burning enough of calories, but I'm ensuring that I'm walking enough, I'm on my toes, and I'm eating what is required for my body. Right. So you need to listen to your body. Right, for sure. So Nidhi, like, do you have any such story of any of your patients, any interesting story of
any of your patients, like, you know, any motivational kind of story if you have? So there is this lady, um, um she lost 49 kgs in 10 months. Wow. And she was 32 years old, and she was that time she was a mother of 4 years old daughter. तो when she connected me, उसके फॉर्म में ये लिख कर आया था that just imagine 32 years of lady and hypertension, ठीक है, high blood sugar levels, irregular periods, ओके, स्ट्रेस, ये सब जहाँ आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन स्टार्ट होने लगता है, ओके। Right. एंड इन फर्स्ट 3 months शी लॉस्ट 18 किलोज। Wow. देयर आफ्टर प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो हो जाती है, बट देयर केम अ डे करवा चौथ का। करवा चौथ पे उसके हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके बोला, कैन शी ईट व्हाट आई वांट हर टू ईट। इसमें एनवायरमेंटल सपोर्ट बहुत मैटर किया, बिकॉज हर हस्बैंड हैज़ बीन सपोर्टिंग हर थ्रू आउट हर जर्नी, that I am there to take care of the children. You Right. go out, go for a walk, go and cycle for 20 minutes. Right. Okay, that's okay. I will eat the same food what you have to prepare yourself. एक फीमेल के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस ही यही है कि उसको अलग से बनाना पड़ता है, Mhm. ओके, हस्बैंड के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग। Right. नहीं, ये तो है, I totally agree with this fact that I think environment is the most important thing. Absolutely right. Yeah, when you want to achieve And such not goals. only family members, Yeah. even friends. Right. You know, मेरे पास जितने यार खा ले, teenagers, एक बार yes, खा ले। 16, 17, 18 years old girls, and they don't want, they always hide their face, and they tell me कि I have not told my friends that I am on a weight loss journey. We Indians are into making fun of others. True. ओके, कि क्या यार ये तो एंजॉय नहीं करती है, लाइक मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, अब तो आई हैव चेंज देम, आई एम ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स, आई वुड से। Right. सो यू नो, बाकी आई नो मैनी, दे टेल मी कि हम जाते हैं तो हम मजाक उड़ाते हैं इफ़ वी ऑप्ट फॉर, तो आई टेल देम, आप जैसे आप एक मील से फैट लॉस नहीं कर सकते हो, एक मील से आप वेट गेन भी नहीं करोगे या फैट गेन नहीं करोगे। गुड इफ़ यू कैन स्टिक टू द प्लान, इफ़ यू कैन नॉट देन हैव पेशेंस। प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो होगी, प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, जो रिजल्ट 3 months में दिखते हैं वो शायद 6 में दिखेंगे, Right. बट यू शुड स्टे कंसिस्टेंट। Right. I think right, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि you don't really see the progress एकदम से, हाँ, and then you start getting demotivated. अरे That मैं is- इतना कुछ कर रहा हूँ। that is where non-scale victories come ना। Exactly, that is a testing point, I Yes. think, है ना? And if you're seeing fat loss, that is, if you're seeing that your clothes are, getting looser, and your, skin is getting better, metabolism अच्छा हो रहा है, endurance बढ़िया हो रहा है, workout करते time performance अच्छी हो रही है, ओके, गट एकदम क्लीन है, सब कुछ अच्छा है, बस वेट ही नहीं हिल रहा है, ओके, स्केल वही है सेम एवरी डे, Right. दैट इज एन इंडिकेशन दैट you are losing fat, Right. and True. not everyone can achieve that. True. Very interesting, I think. So, Nidhi, like, what do you think about whey protein? Like, and like these supplements, are these healthy or not? Uday, I see, taking whey or taking supplements totally depends on the individual's goals. Okay, मेरा गोल नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा मसल बिल्ड करनी है, एंड इफ आई एम एबल टू प्रोक्योर माई daily amount of protein in my diet, then I don't need it. Right. Okay, but if my goal is to improve better or to gain more muscle, then yes, I can take a scoop of whey protein or a scoop of any other source of protein. Right. But And what what about else? what about multivitamins? Like, I think matlab mainly my point of asking this question is कि like, are they really healthy, or like, See, a of course lot they of are people they healthy. say, Of course they are Hmm. healthy, but multivitamins I don't really suggest. If at all you are deficient in particular vitamin or mineral, then you should have that particular. If you are deficient in zinc, then you can have zinc tablet or magnesium tablet. If you are deficient in iron or vitamin D3 for that matter, you should have particular multivitamin, not multivitamin, particular vitamin or mineral.
Right. नॉट द मल्टीविटामिन, बिकॉज उसमें अमाउंट बहुत मिनिमम होता है. You, there is something called vitamin toxicity also. अच्छा. Yes. So unnecessarily don't keep popping on multivitamins and supplements. Yeah, like मतलब अगर इतना like you take it that frequently, it's not healthy. That is why they say that Yeah. you should always take a break. Right. है ना, take if like after 40s one should take multivitamins regularly. Right. Right. Or the particular like iron tablets or vitamin D3, calcium and all. So doctors even they suggest कि take it for 3 months, take a break of 2 months, then again take for 3 months. Right. अगर आपकी डाइट से आप नहीं प्रोक्योर कर पा रहे हो तो. Right. All right, Nidhi. I think it was really great chatting with you. Same here, Uday. And guys, I would like to tell you that Dr. Nidhi has her own brand. She's got a diet boutique in Gurgaon, which is called Curves and Contours. So, like, if any one of you need any tips, any suggestions, anything regarding your nutrition, do visit her clinic, which is in Gurgaon. And I think the podcast today was pretty insightful, and I really hope you guys enjoyed it as well. So, like, would really mean a lot if you guys can just subscribe and share. Thank you again. Thank you so much for watching.